Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 11.2. 11.2 मतलब सही ना? Exercise 11.2 question number 2 इसमें question number 1. Question number 1 के अंदर three parts थी A B C D. उसमें एक मिला वाले part को part A. Part A किसो उनको एक point arrange variance in standard deviation by the part instead of data. मुझे ये data रख दिया. दिया वाले मुझे rate मालूम हुआ दी. Variance मालूम हुआ दी. Standard deviation मालूम हुआ दी. data सही. सही है दोनों का टोटल आउटपुट डेटा सर 35 79 44 63 92 28 20 now select data b beta data से compare weight of the solution की देशी mass of the solution की देशी process for data हम select की देशी और the random data रखना the will use to more body the two algorithm से कर दूसरा इसी table यो table में ड्रा यो सिंपल table में ड्रा क्वेश्चन में ड्रा हम सब टोटल वैल्यू सुई 7 हम serial number 1 2 3 4 5 6 7 volume या हम सब volume xi the xi will only use 35 था 79 था third number 44 4 number 63 5 92 और 6 number 28 अब 7 multiplied 20 या हमने सब का xi minus x bar whole square या हमने xi minus x bar whole square बकाया था वही बकाया नहीं उधर हम हमने सब का रेंज तो रेंज मालूम होने से ना पड़ता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू या वेरिएंस हम सर बराबर है कि a स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन xi minus x bar whole square divided by n दोनों ले तो xi को पकड़ता और ऊपर को ले x bar को पकड़ता और फिर अपना समेशन xi minus x bar whole square पकड़ता तो धीरे पर उसी को टेबल बढ़ रहा जो टेबल रखा ना हमने जो xi पकड़ते आप हमको ही करना तो एक मतलब पकड़ता समेशन xi समेशन xi जो मालूम that will is बराबर है टोटल टेबल that total will is बराबर है 361 that total to summation xi और फिर में सब का निकाल में कीजिए xi minus x bar जो xi minus x bar को कम जब तक xi को 35 minus 51.75 is equal to minus 16.57 35 plus minus 51.7 was that 51.75 कम देखो और ये भी प्लस 2 रहेगी Seren में मालूम होगा लार्जेस्ट वैल्यू स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट उस पर गिवन डेटा एग्जांपल लार्जेस्ट वैल्यू से 92 92 में स्मॉलेस्ट वैल्यू हम सर 20 तो ये हमारा है 72 तो हम सर अरेंज चेक कर दिया मालूम छो वो स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस सिंबल में हम 10 पर अपन ये स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x minus x bar whole square divided by n तो हम सर xi वैल्यू बिस्ते x bar वैल्यू बिस्ते x bar मतलब सर b टोटल लेवल b मालूम पड़ी b दर सब रावली so what is the summation xi divided by n the mean terms are say the total observation बराबर है और that 1 plus 2 which is that total observation 1 plus 2 so हम सब राशि 361 was number of observations to be 7 here divided by 7 तो राशि 51.75 तो 51.75 तो सब राशि है सही तो xi वैल्यू जो हम सब रखते x bar जो मालूम है हम सब 51.75 थे तो that वैल्यू जो देने माइनस तो राशि minus 16.57 minus full relation the greater number is 51 there the sign is a minus so the ratio minus 16.57 was second rule ratio 79 the 79 the 51.75 minus the ratio 27.23 the ratio third number is 44 the 44 number 51.75 the 1 minus the ratio minus 7.57 the ratio 463 minus 51.75 that ratio 11.43 that was minus yeah 5 number 92 and 92 number 51.75 minus that ratio 14.43 और तो प्लस में वो नहीं रहती प्लस साइन बचा के नहीं समझा ग्रेटर नंबर चाहिए 92 ले और स्मॉल नंबर चाहिए 51 ले the greater number sign plus है तो तीनों प्लस वाला का वही सीखो प्लस हो गई और 6 नंबर वाला 28 है 28 नंबर हो गया 51.75 minus that ratio minus 23.57 7 number we are at 20 the 20 number होगा 51.75 minus 31.57 relation was the relation बकाया is xi minus x bar whole square जो कंपेयर कर रहे हैं तो that will बराबर है स्क्वायर वाले minus 16.5 square बराबर है 274.56 where we will just say 27.23 whole square that was 752.40 है that was हम चला third number है minus 7.57 square 57.30 है 4 number 11.23 square that was 130.6
4 इसमें मतलब क्या है 11.23 वाला twice टाइम मल्टीप्लाई है 11.23 मल्टीप्लाई 11.43 यार दूसरा 5 नंबर से एक मिनट हो जाता नंबर दूसरा राशि 20.43 होल स्क्वायर में राशि 163.45 दाग यहाँ पे ना कोई दूसरा नंबर माइनस 23.57 होल स्क्वायर दाग बराबर शी डबल 5.54 मतलब है 555 का नशा है 14 हो जाए इसे और हम सर लास्ट में बोला नहीं ऐसे और फिर उसका और खा जैसे कि बड़ी फॉर्मूले के साथ शुरू करेंगे हम सर का समेशन x i माइनस x बार स्क्वायर समेशन मतलब है कि दा वैल्यू से स्क्वायर रूट मालूम को दा जमा ये तो वही समेशन ये टर्म तो सो ये तो वही समेशन टोटल वैल्यू जमा कर रहा है तो उसको जैसे जो हम समेशन माइनस समेशन x माइनस x बार स्क्वायर दा टोटल वैल्यू बराबर है जब जमा करता है राशि डबल 401.68 तब हम सर सिंपल राशि तब हम सर राशि समेशन x i माइनस x बार स्क्वायर तो समेशन x i माइनस x बार स्क्वायर जो हमने को संबंध को तब हम सर जो हमने डाल दिए डबल 401.67 was हम सर n the total number of observation की हमने सुनी तब हम सर 7 1 2 3 4 5 6 7 सुनिए हम सर 7 वैल्यू हम सर ना सुनिए 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है 7 वैल्यू was the 7 को और क्या है सेवन लगे 7 then मतलब सर 7 तो 7 वैल्यू 7 में डिवाइड किया हुआ है j square is equal to 628.81 was हम सर 7 को का स्टैंडर्ड डिवीएशन मान में ये स्क्वायर होगा सी जो बड़ी मतलब अंडर रूट वाला मतलब स्क्वायर देखा हमने तो मान से हम सर अंडर रूट हम सर राइट अंडर रूट a square of 628.81 this one should root by is 225.076 क्वेश्चन में कैसे लगा दूं क्वेश्चन के मुझे भी रेट मालूम पड़ी रेट मुझे कंप्लीट मालूम को सही है दागे ना और या ये कैसे लगा दूं वेरिएंस को मालूम है वेरिएंस है वेरिएंस हम सब बराबर है वेरिएंस समेशन x minus x bar whole square divided by n the variance formula हम समझा the x minus x bar whole square for so the value of the 7 dot the answer है that is variance है सर that is variance variance को मालूम बस को स्टैंडर्ड डिवीएशन प्रकार दे जो स्टैंडर्ड डिवीएशन प्रकार दे रूट को ये मान सो ये मान डायरेक्ट का रूट को दी वेरिएंस ऑन द रूट इज इक्वल टू 628.81 that value is सारा ना से सर that was a standard deviation that total check up value जरूर हो ना हम क्लियर हो ना सही है भाई क्या पार्ट बी पार्ट सी नाम निशान ना पहले सेक्शन के लिए हमको